जैसे अब मोर देन 10 पीपल की बात करें, जहाँ पर आप लोग को क्या देना होता है, वी हैव टू गिव आल्सो लॉट्स ऑफ व्हाट इज एन फैसिलिटी एंड देन दे यू शुड आल्सो गो फॉर गिविंग. आई सेड दैट health insurance facilities through the government and all, and then several things are there, उसके अलावा included है. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर इस तरीके से बन सकता है. लेकिन आई सेड दैट देयर इज एन वेयर वी हैव व्हाट प्रॉपर मैनेजमेंट इज देयर, departments are there, understood, whole marketing facilities are there, understood, whole transportation facilities are there, energy is available, so many things. I said that so that the cotton textile industry is not a small. So organized sector में where is a huge, I said that infrastructure is there along with better management, understood, and administration, and then development aspect. That is known as organized sector. And another is, I said that unorganized sector in the small towns here and there and the other cities here and there, it is not in the reason of, I said that, hubs. यदि आप जाओगे, if you'll go into the nearby Nehru place in Delhi, it is in a what is in a place of what I said that one of the Asia's biggest what is in a information technology hub and the related products you can be able to have. तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से बना हुआ रहेगा, तो आप जाओगे यहाँ पे ये मिल जाएगा, वो सारी चीजें रहेंगी. लेकिन यदि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगा, एंड इफ यू आर नॉट नोइंग दैट दिस पार्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ अवेलेबल ओवर देयर हियर एंड देयर, तो जब अनऑर्गेनाइज होगा तो उसका कोई आपको यूज मैक्सिमम यूज नहीं होगा. आप किस प्रकार का यार्न प्रोड्यूस कर रहे हो, यार्न की भी क्वालिटी होती है. व्हेन यू आर ग्रोइंग द थ्रेड का भी एक लेंथ होता है, 1 inch length, 1.25 length, 1.5 length, 1.8 inch length. This is known as a staple cotton. So I said that जितना अच्छा कॉटन का लेंथ होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी. और हमारे इंडिया में भी आई सेड दैट वेयर इट इज ग्रोइंग एंड उसका हर एक जगह का भी जो यार्न बनाया जा रहा है उसका भी सेम बना दिया जाए, तो सेम कॉस्ट दिया जाए, तो वो भी तो अच्छा नहीं है. So unorganized sector, simply I said that missing the infrastructure, missing the management, missing the administration, and then I said that some entrepreneurs are involved. Large entrepreneurs are not involved. So we can be able to say that I said that unorganized sector in India is large in number, and then or organized sector it is very less in number. Understood? So therefore our fabric quality is less. Organized sector quality of machine will be very good. Unorganized sector quality of machine they will be kam chalao. Understood? So if it is not good of quality of machine, then the fabric quality never be. So why do the fabric quality of India is not good? The reason behind only I said that most of the mills or most of the power looms which we have, I said that it is in the unorganized sector, not in the which sector? Organized. So organized sector में आपको ही पता होना चाहिए कि you must be knowing that there should be, I said that, large machine, quality machine, there should be updated machine, upgraded machine, always will be there to what is going to provide the quality fabrics. So therefore I said that other worlds have already, I know that India is number 1 in the cotton production in the world. Number 1. Last year he exceeds China by few percentage, only point में something. So China is the second. So I said that you can think of like say that कि हमारे पास क्वालिटी मशीन होना चाहिए एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए. अंडरस्टूड? देन ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ फैब्रिक विल increase. So समझ में आ गया why we are, what is the reason that we are, what is, and I said that we are not good at fabric but we are good at yarn. समझ में आ गया? So we have been able to see Maharashtra and Gujarat region it is in a, itself in a what is in a cotton growing region. और उससे पहले पंजाब में कॉटन नहीं ग्रो किया जाता था. पंजाब में the people are not growing, if you see in the earlier years में पंजाब, राजस्थान, western Maharashtra, western I said Haryana, they are not growing cotton. And then some Telangana region and some region here and there, few places are there. But cotton is mostly produced in the which region? I said that Gujarat and Maharashtra. Second one, I said that this is a large market, it is providing better transport facility, energy is available, and then I said that urban centers means I said that most of the port facilities are also there. So therefore it is able to grow. And then Arabian Sea is providing, I said that natural humidifier. Understood? So therefore the cotton in textile industry, याद हो गया आपको cotton textile industry गुजरात and महाराष्ट्र में क्यों early years में grow हुआ? क्योंकि दूसरी region में ऐसा नहीं था. Next one I said that importance of cotton textile industry in India.
आई सेड दैट यदि मैं कॉटन टेक्सटाइल को बोलूंगा तो क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज क्लोजली लिंक विद एग्रीकल्चर फर्स्ट. सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस में तो पहले हम लोग ये भी बात कर सकते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? आई सेड दैट इट इज एन आई सेड दैट 15% ऑफ द व्हाट सॉरी आई सेड दैट लार्ज कंट्रीब्यूटर इन द आई सेड दैट फॉरेक्स 25% जो आ रहा है उसमें सबसे बड़ा वही है. लार्ज अमाउंट ऑफ 60 मिलियन तो नहीं बोलूंगा, लार्ज अमाउंट ऑफ आई सेड दैट एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली एंड अनएम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली, लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज प्रोवाइडिंग एंड लार्ज परसेंटेज इट इज गिविंग इन द व्हाट इज एन आई सेड दैट आई सेड इन द GDP sectors. So we have to give first few things like this and thereafter will come for that it is directly related to which sector? Agriculture. Therefore cotton production will what is giving a what boost to the farmer to grow more and more cotton. And इसीलिए एक वन इशू भी आप जानते होंगे, व्हाट इज BT कॉटन? व्हाट इज BT कॉटन इन द बायोटेक्नोलॉजी? few years back it was in more in news. Huh? Genetically modified crop. You know that there is one organism is there that you know that their leaves are there and then जितना leaves एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो कॉटन को प्रोड्यूस करेगा. तो एक यहाँ पे एक वॉर्म होता था that is a bacillus that used to what eat those I said that leaves, और उसके lips छोटे हो जाते थे. तो जब छोटे हो जाएंगे तो less energy will be absorbed by the sun, and when the less energy will be absorbed by the sun then what will happen? What will happen? Less energy, then the production will be less. और जब less production होगा तो इसका मतलब है कि production in the crop cotton reduces. तो इसलिए क्या निकाला गया कि जीन्स ऑफ कॉटन, जीन सीड का कॉटन लिया गया और उसमें उस बेसिथिलस जो वॉर्म था उसके ही जीन को लिया, जेनेटिक स्ट्रक्चर को, और उसको क्या कर लिया? जेनेटिकली मॉडिफाइड, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. यस. And then we recombinant technology it is known as the recombine the genes of the two. अब वो ग्रो कर रहे हैं तो उसके ऊपर अब वो आके खाता है, बेहोश हो जाता है. So it is in the trees are remain like this, but in the future what will be the impact, environmental impact? This possibly this kind of cotton will possibly अभी ग्रो कर रहा है but over the period हो सकता है उसके जीन की वजह से other genetic structure can change. So that is also some issues are there, therefore so many things that the people are talking about. So तो एक तो हम लोगों ने देखा कि it is directly related to agriculture and agricultural farmers are getting large number of what is and I said that employment. समझ में आ गया? तो large number of indirectly the